I'm just starting. Okay, fine. So, today we'll discuss about Std State Stability. Whenever you talk about, you must have read something about the stability in power systems. So, when we talk about, खोल दिया था मैंने. When we talk about stability, we make that, we generally know there are two types of conditions for, in normal operations. The first one is steady state, and another one is the transient state. So, when we talk about a steady state, we say that the system variables do not change for a certain period of time, and there are certain systems that are defined according to your certain different variables. So you know what are the governing equations of that system, and those variables are to be monitored such that to see the system is either stable or not. ठीक है, तो ये आप पावर सिस्टम्स में थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे. Now, when we come to drives, we are basically into two modes of operation. And the first one is the steady state operation, and another one is the transient operation. Whenever you may be knowing that you must have studied swing equation in case of power systems. ठीक है, swing equation थी और दूसरा आपके पास two area criteria. Have you studied this in power systems? Anybody of you? Have you studied two area criteria of stability in power systems? No, sir. Okay, so the very first thing we come into the definition. I'll tell you then. The very first thing is that we come into the definition of this stability. How you define a stability? Say you have a ball that is kept on an edge of a cliff. ठीक है, or something is that is put on an edge of a cliff. So when you have, so it is stable. None of the parameters. It is in equilibrium, and it is not any of the parameters is not changing. It is placed at a certain point. There is no change in uh, position. There is no change in speed. It is idle at its point. Okay, so you can say that it is in equilibrium. That means there is no change in state of that object. Now what you do, you simply disturb it. Disturb it का मतलब आपने थोड़ा सा उसे हिला दिया, ठीक है. तो obviously disturbance here comes in the form of displacement, ठीक है. So you displace it. So what will happen? It will fall down, ठीक है. So falling means that it is not going to settle at a certain different position or be at the very same level at which it was. So when you define a stability, the stability means that a system when disturbed comes back to its original position in any terms. ये हम खाली एक एग्जाम्पल करें. It comes back to its original state or position or settles down to a new state or position. Then if this thing happens after disturbance, then you consider that system to be stable. Okay, what is the difference between stability and equilibrium is that whenever stability always involves a disturbance. That means if you have to check stability, you will have to give it a system a small disturbance. Obviously, anything cannot bear a very large disturbance, but still there is a limit of it. And if you give a small disturbance to it, and you can see that why either a system is stable or not. If it returns back to its original state or settles down to a new steady state condition, then you say that the system is stable. Obviously, there is a margin of stability, any or a margin of disturbance what you can give to a system. ठीक है, आप बहुत से सिस्टम को ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे के भी
उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी नहीं लूज़ करेगा. बट इफ़ यू हैव systems which do not have a very appreciable margin of stability or steady state stability. ठीक है, you must have had, studied in this part in synchronous machines that जो आपके पास टॉक एंगल होता था वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा सकता. इफ़ द टॉक एंगल goes beyond 90 degrees theoretically, तो what happens is that the system goes out of synchronism. ठीक है, ये सारी चीज़ें थी आपके पास, यानी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा और इट विल लूज सिंक्रोनिज्म. दैट मीन्स इट वाज ऑपरेटिंग एट अ सर्टेन स्पीड. Say you have a certain disturbance, you put a load on it, so what will happen? There will be a speed swing for a very small time, and then your system will again settle down at the same speed, maybe with a different load torque angle or simply the torque angle. ठीक है, यानी रोटर और स्टेटर की जो फील्ड के बीच में जो एंगल है वो हो सकता है चेंज हो जाए विद न्यू लोड कंडीशंस. But the thing is that the machine never was out of synchronism for a very large period of time. ठीक है, obviously there were small disturbances in between it, but the system settled down to a new steady state condition. ठीक है, so this aspect is very much important when you consider any drive operation or any motor operation. Even in case of power systems, in case of electrical machines, in almost all the conditions, you will have to always consider the stability limits of that system, because we are at initial stage of this course. ठीक है, ये आपका undergraduate level course है. So here we'll only talk about steady state stability. You will also study some part of dynamic stability or transient state stability of power systems in power system 3 most probably, your course power system 3. So it is advised that you go through that topic very thoroughly, because that is a very important topic when you come into operation of power systems. ठीक है, तो here we'll talk about steady state stability. Obviously there is a transient state in between two steady state conditions, and a system when disturbed goes into a transient condition and then settles back into a new steady state condition. And if the system does not come back to its a new or its original position, in that case the system is unstable. So in case of electric drives, we talk about the mechanical aspect of this, because the load here is mechanical. So we will judge the stability of a system in the speed torque plane. Okay, if the system is stable in that plane, it means that the system will work properly for the conditions of different load and motor ratings. ठीक है, so now what we have is that how to check that stability is जो उसका नतीजा निकला is that you give a small disturbance to it, and if you give a small disturbance to it, you will then judge that either the system is stable or not. ठीक है, तो here in this case the only disturbance that you can give, and obviously you are considering a mechanical load at the output of the machine, so you consider that the disturbance can be given in terms of either torque or speed. So if you give a disturbance in terms of torque, again it is going to affect the speed. ठीक है, अगर आप उसका टॉर्क घटाएंगे या बढ़ाएंगे कुछ भी करेंगे, तो what is going to get is that you are going to have a change in speed or net change in speed. So it's ultimately that you change the speed and you can check the stability. ठीक है, इसलिए हम स्पीड वेरिएशन अगर देंगे तो वो चाहे हम टॉर्क वेरिएशन भी दें तो भी वो उसका इफेक्ट स्पीड के टर्म्स में ही आएगा, और स्पीड का वेरिएशन देंगे तो ऑब्वियसली यू कैन डायरेक्टली सी दैट वो स्पीड में ही इक्वेशंस चेंज करेगा और उसकी पोजीशंस चेंज करेगा. तो यू गिव अ डिस्टर्बेंस इन टर्म्स ऑफ स्पीड on a speed torque plane.
So how it looks like and how it happens is that you have a certain motor torque. ठीक है, ये आपके पास अब तो पॉइंट ऑफ, सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ ऑपरेशन. हाउ यू डिफाइन दैट, हाउ ए मोटर and a load are going to interact and at what point of operation. Point of operation means that which would be the speed and the torque coordinate on which that motor load system will work. इसका मतलब क्या है कि that if you have a motor coupled to a load mechanically, ठीक है, आपने एक मोटर शाफ्ट किसी लोड पे लगा रखी है, तो मोटर शाफ्ट किसी कपलिंग के थ्रू लगी हुई होगी एंड इट इज द लोड एज वेल एज द मोटर आर एट द सेम स्पीड. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट बिकॉज दे आर कपल्ड थ्रू सम मैकेनिकल अरेंजमेंट. कपल का मतलब करता है उसे बांध देना आपस में या वो करना, ठीक है, जोड़ देना. ठीक है, तो अगर वो कपल कर देंगे तो क्योंकि दोनों शाफ्ट एक ही जगह जोड़ी हुई हैं, तो दैट इज वाई देयर स्पीड एंड देयर टॉर्क विल बी द सेम. So the very same thing, concept, or say the very same fundamental is extended back into this speed torque plane, that you will have a point that will be an intersection of your characteristics of load and characteristics of the motor. Characteristics means speed torque characteristics. And the point at which they are common, जैसे हम point A अगर आपको इसमें दिख रहा हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इसे. ठीक है, यू हैव दिस पॉइंट ए, दिस इज टी, दिस इज द मोटर टॉर्क एंड दिस इज द लोड टॉर्क. ठीक है, ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है आपके पास. वी हैव टेकन डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इट. ठीक है, तो यू हैव ए मोटर टॉर्क टी एंड दिस टी एल and they are intersecting at a point, say A, because, and obviously at this point A will be having the same coordinates for TL and T, or you can say that A lies, the point A lies on both the characteristics. A जो है वो TL पे भी मौजूद है और A जो है वो T पे भी मौजूद है. And in other words you can say the point of intersection of T and TL is A. ठीक है, so this becomes the point of operation on which the load characteristics meet the motor characteristics. This is known as the point of operation. Now what you have to see is that either this point of operation is a stable operating point or an unstable operating point. पहली बात तो is that you will only have an operating point if the characteristics meet. If they do not meet, you don't have any operating point of that motor load system and the motor load system won't work. The second thing is that you may have an intersection of characteristics and you may have a point at which the load characteristics meet the motor characteristics, and then you will also have to check that the machine or the motor load system will operate on that. Then you have to check either it will be stably operating on that or not. ठीक है, तो ये दो बातें बनती हैं हमारे पास. पहली तो ये है कि अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक जगह मिलती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तभी उस मोटर और लोड सिस्टम का कोई ना कोई ऑपरेटिंग पॉइंट बनेगा, वरना वो अनऑपरेटिव रहेगा. दूसरी चीज ये है, जहां पे वो मिलती हैं, यू विल हैव टू चेक द स्टेबिलिटी. if the point अभी हम बताएंगे आगे चलिए कैसे चेक करते हैं. if the point comes out to be stable, then that motor load system will only work in an stable condition, else it will be running out. यानी आपने कोई जो दो चीज पकड़ के लगा दी, तो it does not mean that it is going to stick at that point. It may run away. जैसे अगर आपने सिंक्रोनस मोटर्स में देखा होगा that even if you put your system into synchronism, आप रोटर को सिंक्रोनिज्म में रख दीजिए और उस पर इतना लोड रख दीजिए, तो what will happen, the rotor will jam and the synchronism will be lost. ठीक है, तो it does not mean that कि अगर आपने दोनों characteristics कहीं पे मिला दिया है तो it is going to operate stably. So how to check this stability is that the very same old thing, that you provide a disturbance to that motor load system
for use in terms of speed, a very small speed disturbance is provided at that operating point, or the point of intersection of your speed torque characteristics of the motor and the load system, and you will check that either the system is stable or not. ठीक है, तो अगर वो वापस उसी कंडीशन में आ जाता है, देन यू कंसिडर इट टू बी स्टेबल. ठीक है, तो आपने क्या किया, you gave a small disturbance to all the parameters of this equation. ये आपके पास जो इक्वेशन थी t इज इक्वल टू टी एल प्लस जे डी ओमेगा एम बाई डी टी, ठीक है, जो ओरिजिनल एक मोटर लोड सिस्टम की एक टॉर्क इक्वेशन थी. तो उसमें क्या किया आपने, सब कंपोनेंट्स में एक स्मॉल डिस्टर्बेंस ऐड किया, डेल्टा टी एल, इक्वालिटी वही रही, ठीक है, जे डी ओमेगा एम एंड दिस डेल्टा ओमेगा एम. So you provide a small perturbation. Perturbation is known as a set disturbance. ठीक है, तो now you open up, ठीक है, आपने एक small disturbance दे दिया, and now you will analyze this equation कि either this equation gives the very same result or not. ठीक है, तो अगर आप इसमें वो करते हैं तो you open up this 2.25 is the opened up equation of this. Then you rearrange में क्या है कि आपके पास जस्ट वेट, वाली इक्वेशन भी आपको दिखाई दो. ये जो मोटर लोड सिस्टम था आपका, आपके पास ये वाली जो इक्वेशन थी इसकी, सॉरी, फंडामेंटल इक्वेशन ये वाली जो थी इसकी, ठीक है, इन्हें एट अ टाइम व्हेन व्हिच डी ओमेगा एम बाई डी टी वॉज प्रेजेंट इन द सिस्टम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि डी ओमेगा यानी चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम गोज टू 0. तो नाउ व्हाट यू हैव इज दैट कि जो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, तो इसमें यू कैन राइट एज टी माइनस टी एल माइनस जे डी ओमेगा एम बाई डी टी इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों टर्म्स, या तो ऐसे इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आए. तो व्हाट हैपन्स ओवर हियर बाय पुटिंग दिस वेरी सेम थिंग, तो इस इक्वेशन में जब हम वाली वैल्यूज रखेंगे 0 के बराबर, तो यू रीच टू दिस पॉइंट, you only come in terms of disturbance, and then one assumption is also taken over here is that how you transform this delta t, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप टॉर्क को भी टॉर्क का इफेक्ट डिस्टर्बेंस में देखेंगे तो इट विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ स्पीड. If you increase the torque, तो what will happen? The machine will accelerate. If you decrease the torque, the machine will decelerate. So whenever there is a disturbance in terms of torque, you will always see that it will come out in the form of speed. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ, जिसमें स्पीड भी मौजूद है और टॉर्क भी मौजूद है, तो उसे हम स्पीड के टर्म्स में करने के लिए क्या करेंगे, यू हैव अ रिलेशनशिप कौन सी है, यू हैव अ स्पीड टॉर्क रिलेशनशिप. अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की आप आराम से लिख सकते हैं, यू आर ऑन अ सेम प्लेन. So what is that any type of characteristic what you have, even of an induction motor, any type of, even it is a circle or a rectangular hyperbola जैसे आपके पास DC सीरीज में होता है, ठीक है, if you take a very small part of it, it can be always considered as a straight line. Remember that if you have any curve, any type of curve, sinusoidal हो और जो ट्रेपीजियल हो, चाहे आपके पास हाइपरबोलिक हो, कैसा भी हो, इफ यू कंसिडर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कर्व ऑन एनी एक्सेस, ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बीच में हो, तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दैट स्मॉल पार्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए स्ट्रेट लाइन फॉर दैट स्मॉल ड्यूरेशन. ठीक है, so then the very same thing is used over here is that these two are transformed, delta t is equal to
the slope multiplied by the change in speed, and delta TL is equal to slope of that curve multiplied by change in speed. So if you go on replacing this with this one, so you go real to a value that is a differential equation in terms of delta omega. ठीक है, it is a first order differential equation d delta omega by o. डेल्टा ओमेगा के टर्म्स में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो यू आर इंटरेस्टेड इन डेल्टा ओमेगा बिकॉज द वेरी स्मॉल स्पीड डिस्टर्बेंस डेल्टा ओमेगा वाज गिवन टू दैट सिस्टम. सो इफ ए सिस्टम हैज टू बी स्टेबल, इस चीज को थोड़ा सा गौर से सुनना, इफ द सिस्टम हैज टू बी स्टेबल इन दैट केस दिस डिस्टर्बेंस हैज टू गो टू जीरो. अगर आपने कोई सिस्टम डिस्टर्ब किया है, कितने उस ओमेगा पे चल रहा था, उसमें डेल्टा ओमेगा से, डेल्टा ओमेगा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिस्टर्ब किया उसे, तो मे बी दैट जो आपके पास चेंज इन स्पीड आया हो वहाँ पे, बट जो बाय द टाइम व्हेन द सिस्टम हैज टू बिकम स्टेबल, दिस डेल्टा ओमेगा और द चेंज इन स्पीड हैज टू go to zero. If the change of the speed does not goes to zero, then the system will remain oscillating. So that is why what we do is that we have a first order differential equation in terms of delta omega, and then what we do is that we solve this equation, find out the value of delta omega, and find out the conditions for which this delta omega goes or approaches to zero as time tends to infinity. यानी हमने इतना टाइम दे दिया उसे कि कितने भी टाइम में, बट इट मस्ट सेटल डाउन. So the extreme conditions are given. The first thing is that the delta omega must go to zero. The second thing is that it can take any amount of time. Say put it at infinity. So the condition for this is that if you solve the value of this coded differential first order differential equation in terms of delta omega, and you find out the conditions for which delta omega goes to zero as t tends to infinity. This will give you the condition for which the system is going to be stable or not. If you see that delta omega goes to zero as the time lapses, even up till infinity, the system is said to be stable. And if delta omega does not go to zero as t tends to even infinity, then the system is unstable. If you find out that condition for which delta omega goes to zero, omega tends to infinity, then you can simply say that your drive system will work in a stable mode or not in those particular conditions. ठीक है, तो व्हाट वी डू, ये हमारे पास डेल्टा ओमेगा के टर्म्स में जो था ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इसे सॉल्व कर लिया. ठीक है, और हमारे पास ये आ गया. इसमें आपके पास जो है वो टाइम का भी टर्म है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज दैट दिस टर्म शुड गो टू जीरो. दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये जीरो नहीं हो सकती. ठीक है, जे भी जीरो नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस जे भी जीरो नहीं हो सकता. ये वेरिएबल है आपके पास, एंड दिस इज टी, दिस इज द टाइम, एंड दिस कैन बी टेंड टू इन्फिनिटी. अगर आप करना क्या है कि दिस हैज टू गो टू जीरो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो this equation, for this you must have that the exponent term must be as t tends to infinity, the exponent term must be negative. यानी ये चीज़ जो है नेगेटिव होनी चाहिए. अगर ये नेगेटिव होगी तभी ये नेगेटिव से वो करके पॉजिटिव बनेगी, और तभी ये ज़ीरो हो जाके होगा, वरना ये नेगेटिव वैल्यूज पे चल जाएगी उल्टे पे. ठीक है, यू कैन सिंपली सी फ्रॉम दिस इक्वेशन. So what happens is that this term should be negative. यानी dTL upon d omega upon dt minus dt upon d omega should be negative. नेगेटिव होने का मतलब ये है कि dt upon d omega must be greater than this. तभी ये जो आपके पास इस ब्रैकेट में ये है, ये वाला जो टर्म है आपके पास,
ये टर्म जब ही ज़ीरो होगा, जब ही नेगेटिव होगा, जब आपके पास जो राइट हैंड साइड पे टर्म है, यानी माइनस के साथ जो है, ये ग्रेटर होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म से। ओनली देन दिस वुड बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएंगे, एंड यू विल बी हैविंग एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो दैट इज वाई, in other words you can say that dt upon d omega must be greater than dtl upon d omega, or the slope of the motor torque must be greater than the slope of the load torque. dt upon d omega क्या है? जो आपके पास स्पीड टॉर्क कर्व है, तो जो उसका जो मोटर टॉर्क है और लोड टॉर्क है, तो उन दोनों के स्लोप्स हैं ये, बिकॉज डी टी अपॉन डी ओमेगा जैसे डेल वाई, डेल एक्स अपॉन डेल वाई होता है, जो स्लोप बन जाता है एम, तो एग्जैक्टली वही चीज़ होगी आपके पास। तो यू हैव द मोटर टॉर्क टू बी, slope of the motor torque to be greater than the slope of the load torque characteristics. Now you come back to the original ones. ठीक है, आपके पास ये characteristics आनी चाहिए. Putting these characteristics, this condition in all these four, आपको पता है कौन से वाले जो हैं वो, just wait for a minute. ये आपके पास चार कंडीशंस हैं, 1, 2, 3 and 4. You have 4 operating conditions. Point A is an operating condition in the first quadrant, in which T has, the motor torque has got a negative slope and the load torque has got a positive slope. ये आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो नेगेटिव स्लोप की है, ये वाली पॉजिटिव स्लोप की है. You have another condition in which you have point B as a point of operation, and the motor torque has got a negative slope, the load torque has also got a negative slope, but the motor torque is more negative as, and the motor torque slope is more negative as compared to the load torque slope. Similarly, the third one, you have a point of operation in the second quadrant of the torque omega speed plane. Here in this case, the motor torque is again negative and the load torque is again positive in terms of slope. Then you have the operation in the fourth quadrant. The point of operation is point D. You have to check it whether the point D is stable or not. And you have the conditions of load torque to be negative. ये एक straight line है जो negative slope के साथ है. And you have a motor torque with a positive slope. Considering these conditions, this condition, you can simply figure out, without any knowledge of the type of motor what you have, without any knowledge of the type of the characteristics of the load torque what you have, only depending upon the point of intersection and finding out the slopes of both of them and simply putting it in the values, that the load torque slope must be greater than the motor torque slope on the speed torque speed characters plane. So you can find out the system values are stable or not, based simply based on the equations what you derived over here. कि डेल्टा ओमेगा जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, उसके लिए ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए, ये टर्म के लिए ये ज़्यादा होना चाहिए. तो सिंपली यू कैन रीच टू दीज वैल्यूज. ठीक है, तो ये जो ये मैं आपको उस पर रख दूंगा. आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन द क्लासरूम. यू कैन गो थ्रू इट एंड द वेरी सेम थ्योरी इज गिवन कि कौन सा वाला ए क्यों स्टेबल है, बी अनस्टेबल क्यों है, सी स्टेबल क्यों है और डी क्यों है, based on this very same relationship that is derived from the basic equation of the motor torque, motor load system, of mechanical equation of a motor load system in terms of speed and torque. Anybody wants to ask anything? The topic excuse me, sir. covered today.
Sir, am I audible? किसी को पूछना है? इज इट ओके? Sir, am I audible, sir? हाँ, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल. सर, जो आपने डिराइव किया है उसमें सर इक्वेशन जो सर रिवर्स में आ रहा है सर, उसमें आ रहा है डी टी अपॉन डी ओमेगा एम इज लेस देन दैट थिंग, ग्रेटर देन दैट थिंग. हम्म. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. सही कह रहे हो. देखो, इसमें यह है कि एक चीज गड़बड़ हुई लास्ट में. फॉर दिस टू हैपन द एक्सपोनेंट मस्ट बी नेगेटिव. ठीक है, एक्सपोनेंट नेगेटिव होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए. सॉरी, है ना. द एक्सपोनेंट ऑफ दिस मस्ट बी नेगेटिव, यानी माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है यहाँ पे, तो अगर अंदर भी माइनस आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा. तो दिस, यू आर राइट कि दैट दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन दिस टर्म एंड दिस होल शुड रिमेन पॉजिटिव. सो टू रिमेन दिस टू बी पॉजिटिव, ये हो सकता है मुझसे बताने में वही, सॉरी, ये टू रिमेन दिस टू बी पॉजिटिव, इन दैट केस in all the conditions the load torque must be greater than the motor torque. ठीक है, then only this will remain positive and this whole exponent will remain negative. यानी 1 upon j minus 1 upon j into this. So that is why when this TL upon d omega m has to be greater than dt upon d omega. That is what is written over here. Sir, ठीक है can ना? you summarize one, sir? हाँ हाँ, One, बताओ. can you summarize that अच्छा, one? अच्छा, okay. I tell you again. The thing is that this omega has to go to zero as t tends to infinity. You give the maximum time to it. यानी कितनी देर में भी सेटल हो जाए वो. ठीक है. So for that purpose, what you have to see is that if you consider this equation, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं. If you consider this equation, this is the initial condition of speed, and initial condition, that means the speed on which the system was working. ठीक है, so that is a positive value and this is a constant. Then you have an exponent as a solution of this initial condition and an exponent of this. ठीक है, तो you have 1 upon minus 1 upon j, so this is minus, and a term that is a difference of slopes of load torque and the motor torque multiplied by time. So you can say that this, as t approaches to infinity, what will happen अगर आप इस exponent का curve देखें, e raised to power minus x, ये एक decreasing slope का curve होता है xy plane पे. अगर आप y is equal to e raised to power minus x. यस ठीक सर, है, तो एक्सपोनेंट जो है सर वो टेंड्स हाँ, टू जीरो हो जाएगा. हाँ, वो नीचे आ जाता है, मतलब ये हाइपरबोलिक सॉर्ट ऑफ होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल या ख़त्म सा हो जाता है आके वहाँ पे. यस. यानी वो वैल्यू वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती चली जाती है एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये अगर, और ई रेस्ट बार प्लस एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल चढ़ता चला जाता है ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो व्हाट यू रिक्वायर इज दैट एज टाइम टेंस टू इन्फिनिटी, यानी अगर एक्स एक्सिस पर अगर आप टाइम लें और वाई एक्सिस पे जो है ओमेगा लें, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कम होती चली जानी चाहिए, यानी वो हाइपरबोलिक होना चाहिए. तो उसके लिए ई रेस्ट पर माइनस एक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. तो ई रेस्ट पर माइनस एक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होने का मतलब ये है, ई तो ये हो गया, तो यानी ये हमेशा माइनस रहना चाहिए. ठीक है, तभी ई रेस्ट पर, और अगर हम इस पूरे को एक्स मान लें तो ई रेस्ट पर माइनस एक्स तभी बनेगा जब ये ई होगा, सॉरी ये माइनस रहेगा. तो 1 अपॉन जे इज ए कांस्टेंट,
The only thing that can disturb this relationship is this one. If this goes negative, तो दिस विल बिकम ई रेस्ट पावर प्लस एक्स. अगर हम इस पूरे को प्लस रखें तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. अगर ये इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो भी आपका पैरामीटर्स हैं, अगर ये माइनस हो जाते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, तो ई रेस्ट पावर प्लस एक्स हो जाएगा, जो कि एक्सपोनेंशियली ऊपर चढ़ जाएगा. एंड the speed or delta omega won't be zero as t increases. So that is why this TL dTL upon d omega minus dt upon d omega should always be positive. That means that dTL upon d omega should always be greater than this one to make this term to be always positive. अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तभी ये एक्सपोनेंट नेगेटिव रहेगा हमेशा, वरना अगर ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये है DTL यानी लोड का जो स्लोप है, लोड टॉर्क का, सॉरी लोड कैरेक्टरिस्टिक स्पीड टॉर्क प्लेन में का जो स्लोप है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए मोटर का स्पीड टॉर्क कर्व के स्लोप से. तो द वेरी सेम थिंग इज रिटन ओवर हेयर कि TL अपॉन ये मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वन टू नॉट टू बी इक्वल टू जीरो, ये जो आपका लिखा हुआ है. एंड ऑल दिस इज टू बी चेक्ड इन दिस वन. अब इसमें जो है मोटर टॉर्क जो है आपके पास नेगेटिव है, स्लोप इसका मोटर स्पीड टॉर्क कर्व का, और TL जो है DTL अपॉन डी ओमेगा जो है पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब TL वाला स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है एंड A इज स्टेबल. यहाँ पे क्या देखेंगे, T है नेगेटिव है और TL जो है वो भी नेगेटिव है. ओके, so what actually happens over here is that, anybody? Sir, सर अनस्टेबल रहेगा. slope of TL is more negative than a slope of T, sir. So it becomes it is negative. unstable point. That is ठीक है, unstable. वेरी गुड. ऐसे ही हमारे पास C पॉइंट होगा, तो C पॉइंट में यह है कि मोटर टॉर्क फिर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्लियर डिस्टिंक्शन है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, TL जो है DTL अपॉन डी ओमेगा जो है वो ज़्यादा है इससे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो C इज़ ए स्टेबल पॉइंट. यहाँ पे TL नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये बिल्कुल उल्टी कंडीशन हो जाती है, तो दैट इज़ वाई D इज़ एन अनस्टेबल पॉइंट. ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऐसे दिखाई हैं आपको. अगर अभी नेक्स्ट टर्न पर मोस्ट प्रॉब्ली मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बना के दिखाऊंगा मोटर्स की, एग्जैक्ट मोटर्स की, के आपके पास शंट मोटर की, DC शंट मोटर की, DC सीरीज मोटर की, इंडक्शन मोटर की. तो यू कैन वेरी वेल सी दैट यू कैन हैव मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ operation, but some only single points on which the system remains stable. ठीक है, तो अगले क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी बना के. क्लासरूम टीचिंग में एक थोड़ा सा एडवांटेज ये रहता है दैट वी कैन ड्रॉ वट एवर वी लाइक, बट हेयर व्हेन द क्वेश्चन अराइजेज यू कैन नॉट ड्रॉ और राइट एट दैट वेरी सेम टाइम. ओके, वील ट्राई टू कवर अप. ओके, एनीथिंग मोर दैट इज टू बी आस्क्ड? Anybody of you? नो चलो सर. ठीक है. ओके ओके, थैंक यू देन, थैंक यू. Thank you, sir.